Hi guys, welcome to Hamid's Fun Learning Hub. So we know that budget 2025 say under new tax regime, if your total income is up to 12 lakh 75,000, then you don't need to pay any taxes. Okay, क्योंकि 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में डिडक्ट हो जाता है एंड 12 लैक्स जो है 12 लैक्स के ऊपर टैक्स होता है 60,000 एज पर न्यू स्लैब रेट एंड देन आपका 60,000 तक आपको 87A में रिबेट मिलता है सो आपका टैक्स नील हो जाता है ओके बट न्यू टैक्स रेजिम में भी बहुत सारी डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आज हम लोग देखेंगे अगर आपका इनकम अप टू ₹15 लाख से देन स्टिल यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिडक्शंस अंडर द न्यू टैक्स रेजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 so without wasting any time let's start guys so first standard deduction we know that standard deduction आपको मिलता है न्यू टैक्स रेजिम का अंदर अप टू 75,000 एंड अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में है देन 50,000 ओके नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ओके सेक्शन 80 सीसीडी 2 अगर आपका एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं देन you will get deduction under section 80 ccd 2 so ये government employees can now claim deduction up to ₹14% of their salary क्योंकि budget 2025 में government employees के लिए deduction आपका जो employers contribution 10% से 14% हो गया है okay but private sector employees का same है 10%. For example, suppose अगर आप government employee हो and if your income is 10 lakhs and if your employer contributes 14% of 10 lakhs, that means 1,40,000 deduction you can claim under section 80 CCD 2. Next is deduction for family pension. Okay, अगर आपका family pension है then you can claim deduction of 25,000 or 1/3 of pension whichever is lower. ठीक है सो अगर आपका 60,000 अगर आपका पेंशन है देन 1/3 ऑफ 60,000 दैट इज 20,000 और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर दैट मींस 20,000 आपको डिडक्शन होगा फॉर फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 ओके नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर अग्निवीर कॉर्पस फंड 80CCH2 अगर आपने अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट किया देन आपका फुल्ली taxable हो जाएगा so you can take these benefits for under new tax regime. Next is tax free allowances for employees okay even under the new tax regime the following allowances remain exempt like transport allowance only for specially abled persons conveyance allowance for work related travel expenses tour or transfer allowance for job related transfers or official travel, daily allowance to cover expenses while traveling for work, perquisites for official use like laptop, phone, and internet provided by your employer, then you can also take these benefits. Okay, tax free allowances है जो you can also take this benefit under new tax regime. Even after new tax regime, you can claim exemptions on voluntary retirement fund under section 1010C up to ₹5 lakhs, leave encashment under section 1010AA up to ₹25 lakhs and gratuity up to ₹20 lakhs section 1010 and gifts up to ₹50,000 are tax free okay if you can receive gifts up to ₹50,000 per annum from नॉन रिलेटिव्स विदाउट पेइंग टैक्स अगर आपका रिलेटिव से आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया देन आपका फुल्ली टैक्स फ्री हो जाएगा उसके लिए कोई लिमिट नहीं है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट होम लोन इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 इफ यू हैव टेकन एनी लोन फॉर योर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया फ्रॉम बैंक देन यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 on interest on bank loan on the actual amount के ऊपर आपको actual amount के ऊपर आपको deduction मिलेगा ओके सपोज आपने 2,50,000 आपका इंटरेस्ट है देन आपको 2,50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 सो इसका अगर समरी करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन 14% फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज family pension deduction to 25,000 or 1/3 pension whichever is lower
Ognibir Corpus Fund, 100% deduction, transport allowance, specially abled, fully exempt, daily conveyance or tour allowances fully exempt, leave encashment up to 25 lakhs, gratuity up to 20 lakhs, and voluntary retirement up to rupees 5 lakhs आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके, फॉर नॉन रिलेटिव्स अप टू 50,000, होम लोन इंटरेस्ट लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअल इंटरेस्ट पेड. तो इफ यू वांट टू टेक द न्यू टैक्स रेजिम, देन आपको ये सब डिडक्शन और एग्जेम्पशन यू कैन क्लेम. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे इफ योर इनकम इज 15 lakhs, स्टिल कैसे आपको यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस. यहाँ पर मैं दो एजम्पशन लूंगा. एक एजम्पशन, सपोज मेरा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस है 25,000. Okay, employers contribution to NPS 25,000 and interest on house interest on let out property which is 2 lakhs. So total 2 lakhs 25,000. ठीक है. So suppose if your income is 15 lakhs, देन यहाँ पर देखिए 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा. एंड इन्वेस्टमेंट इज 2 lakhs and 2 lakhs 25, टोटल 2 lakhs 25,000. ठीक है. सो यहाँ पर मेरा हो गया टैक्सेबल इनकम इज 12 lakhs. सो वी नो दैट अप टू 12 lakhs आपका टैक्स होता है नील, क्योंकि आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A में 60,000. ओके, so up to rupees 15 lakhs of income, you don't need to pay any taxes under new tax regime. Okay, guys. So if you understood, guys. So if you want to become a tax consultant or tax expert, you can join my courses. Okay, if you want to learn income tax, TDS, Excel, PF and ESI, ROC, GST, tax audit, then you can join the courses as per your requirement. And we are not only selling courses, we are also providing support because my mission is to help you guys. So अगर आप टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, then you can join my courses. For that you have to go to my website hamidsmanlearninghub.com. And अगर आपको वीडियो अच्छे लगे so like and share जरूर करना. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.